अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 3, अ शो टू मेक यू फील अप, enthusiastic and positive. Today we are going to enter into episode 44th of Inspirational Wings season 3. तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम बढ़ाएं कदम इस इंस्पिरेशनल राइड की तरफ, मैं आपको जल्दी से याद दिलाना चाहूंगी कि अगर एकदम से जुड़ना चाहते हैं आप हमारे साथ, तो हमारा रेडियो उड़ान है स्काइप आईडी RADIOUDAAN रेडियो उड़ान। तो साथ ही दोस्तों, कल थी होली, तो होली के उपलक्ष्य में अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप योर लाइफ बी फुल ऑफ कलर्स and you lead a more colorful life with positivity and kick off negativity. तो दोस्तों, a very happy Holi to all my lovely listeners. तो चलिए अभी देरी न करते हुए जल्दी से मैं जवाब दे देती हूँ उस रिडल का। जी हाँ, जैसे आपको पता ही है, हर एपिसोड में अंत में मैं पूछती हूँ एक रिडल पहेली, जिसका आंसर देती हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड के पहले सेगमेंट में। तो चलिए अभी समय आ गया कि मैं पिछले एपिसोड की रिडल का आंसर बताऊं। वैसे हमें किसी भी लिसनर का आंसर अभी तक नहीं आया है, सो मैं ही रिवील कर देती हूँ कि आंसर क्या था उस रिडल का। तो दोस्तों, जो पहेली थी वो थी, व्हाट लूजेस इट्स हेड इन द मॉर्निंग एंड गेट्स इट बैक एट नाइट। जी, लेट मी रिपीट इट स्विफ्टली। व्हाट लूजेस इट्स हेड इन द मॉर्निंग and gets it back at night, and the right answer for this riddle is a pillow. जी हाँ दोस्तों, because most of the people sleep in the at night, wake up in the morning, and throughout the day they aren't on their pillow. So the right answer is pillow. The right answer is a pillow, यानी कि तकिया। तो चलिए, you have to wait for today's riddle. I'll be asking it in the last segment because जब भी हम किसी रिडल या पहेली का आंसर देते हैं तो एक खुशी मिलती है, एक पॉजिटिविटी आती है। तो चलिए अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस इंस्पिरेशनल राइड की। हैप्पी लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड। In this world of negativity and worries, now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Udaan, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy. So दोस्तों, now we are in the first segment of this inspirational ride, and in this segment we are going to talk about a moral story. जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो होगी छोटी सी साइज में, पर जो उसका मॉरल होगा, उसकी सीख होगी, वो काफी वजनदार होगी, काफी इफेक्टिव होगी। तो चलिए, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स दिस स्टोरी। हैप्पी लिसनिंग। ये बहुत ही छोटी सी कहानी है, सिंपल भी लगेगी आपको, पर उसका जो निचोड़ है वो काफी इफेक्टिव हो सकता है आपके लिए। तो चलिए बढ़ाते हैं कदम इस कहानी की तरफ। स्टे पॉजिटिव। कहानी का नाम मैं देना चाहूंगी एन आइडिया। जी हाँ दोस्तों, एक आइडिया। तो एक बार एक लड़की होती है जो बहुत ही अच्छा गाती होती है। मतलब ठीक है, उसका गाने का स्किल्स अच्छे होते हैं, उसको काफी शौक भी होता है गाने का। तो वो एक छोटे शहर में रहती होती है, अपनी पढ़ाई कर रही होती है, और ऐसा कुछ उसके जो शहर में कुछ ऐसा है नहीं कि वो ज्यादा कुछ कर सकती हो। तो वो अपना रोज पढ़ाई करती, होमवर्क करती, थोड़ा बहुत समय गाने में व्यतीत करती। तो कुछ समय बाद, कुछ हफ्तों बाद उसे लगने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो गाना तो उसका पीछे ही रह जाएगा, वो गाने को आगे तक पहुंचा ही नहीं पाएगी अपनी आवाज। तो उसने सोचा, काफी तरकीब लगाई कि बिना पैसे खर्चे मैं कैसे लोगों तक पहुंचूं, कैसे मैं बताऊं कि मैं भी हूँ, आई एम देयर। तो उसने इस चीज के लिए काफी सोचा, और कुछ समय बाद, जैसे आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल करने लग गए हैं, यूट्यूब। जी हाँ, उसे ध्यान में आया कि यूट्यूब जैसा एक प्लेटफॉर्म है
तो उसने वो YouTube, पहले इंटरनेट सीखा, उसके बाद YouTube को जाना, अच्छे से समझा कि वो क्या है, क्या प्लेटफॉर्म है, कैसे बेनिफिट हो सकता है, और फिर उसने अपना गिटार उठाया और गाना शुरू कर दिया। गाती तो वो हमेशा से थी, पर अब उसने रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। ठीक है, थोड़ा देसी टाइप में उसने रिकॉर्ड किया शुरू में, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास इतना अच्छा रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था, इतना अच्छा सब कुछ नहीं था, पर उसने अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ये जरिया चुना और उसने जल्द ही अपना जो आवाज है वो YouTube के द्वारा पहुंचानी शुरू कर दी। और फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अपनी वीडियो डाली और 3-4 दिन में इतने ज्यादा व्यूज आए, इतने कमेंट्स आए, इतने लाइक्स आए, और 3 दिन में नहीं, कम से कम 1 दिन में ही काफी उसके लाइक्स आ गए और उसे इससे और भी प्रेरणा मिली और भी मोटिवेशन मिली। हालांकि इससे वो कुछ कमा नहीं रही थी अभी, पर फिर भी एक जो एप्रिसिएशन की भूख होती है हर किसी को, वो उसे एप्रिसिएशन मिलने लगी, उसे कॉन्फिडेंस आने लगा कि यस, शी नोज शी इज गुड एट म्यूजिक, बट नाउ एवरीबडी नोज दैट शी इज गुड एट म्यूजिक। तो उसे वो खुशी मिलने लगी और उसने वो जो गाने थे अपने अपलोड करने शुरू कर दिए हर वीकेंड पे। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स थाउजेंड्स में हो गए, लाइक्स थाउजेंड्स में हो गए, कमेंट्स थाउजेंड्स में हो गए, उसके फैन फॉलोइंग बढ़ गई। पर ये सब कुछ कैसे हुआ, वो है स्टोरी का मॉरल या एन आइडिया, एक तरकीब, एक आइडिया। आप अगर कहीं भी फंसे हुए हैं, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, अगर आप एक आइडिया के साथ आते हैं तो आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल सकती है। जिंदगी जो है हमारी, वो एक आइडिया पे ही निर्भर करती है। इफ यू हैव एन आइडिया यू कैन डू वंडर्स। तो अगर आप भी कोई ऐसा टैलेंट रखते हैं या आपके पास कोई भी चीज है जिसमें आप फंसे हुए हैं, आप कुछ और अलग से करना चाहते हैं, तो पहले एक आइडिया ढूंढिए, एक तरकीब ढूंढिए, क्योंकि आपकी जो आइडिया है वो आपकी जिंदगी में एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो दोस्तों, दिस वॉज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी एंड आई होप यू लाइक्ड इट. In case you have any audio clip or in case you have any story which carries a similar message, a positivity, a pinch of inspiration, then do share with me and I will definitely make it a part of this inspirational ride. For now, I have to take a short break. A series of segments are waiting for us. Stay tuned, stay positive. यहाँ कोई ज़ीरो, यहाँ कोई स्टार है, कोई बेकार है, कोई हीरो यहाँ, कोई ज़ीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों, I'm the best, 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 yes you are the best. मुझे तुम देख लो, मैं नंबर 1 हूँ, कोई काम हो तेज हूँ, बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं फिर भी नेक हूँ, ये तुम भी कहो। अरे भाई वाह, ये तो हिट, अरे भाई वाह, ये तो फिट, अरे भाई वाह, ये भी तो नंबर 1 है, अरे भाई वाह, ये तो हिट, अरे भाई वाह, किसी ने वो किया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है
दोस्तों I'm the best, I'm the best, I'm the best, I'm the best, I'm the best. Yes, you are the best. मुझ में है अजब जादूगरी कि मुझसा प्यार में कोई है कहा क्या करूं है दीवानी मेरी कहे मुझे डार्लिंग सभी लड़कियां यहाँ कोई बैठा यहाँ मगर कोई नहीं मेरे जैसा यहाँ मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ है सच तो ये दोस्तों I'm the best, I'm the best, I'm the best. Oh, you are the best, you're the best, you're the best, you're the best. Oh, yes, 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 yes. Say it again. You are listening. Radio Udaan, a flavoured life. www.radioudaan.com. Radio. So dosto, now we are in the second segment of this inspirational ride, and like always, we are going to listen to an audio clip. Well, before we take another step towards this audio clip, let me tell you that ये जो ऑडियोज होती हैं ये अक्सर लोगों की रिकॉर्ड की हुई होती हैं या फिर अक्सर मैंने YouTube या अदर प्लेटफॉर्म से लेती हूँ, और मेरा मकसद है कि अच्छी जो ऑडियो क्लिप्स हैं मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग और कहीं भी तरीके से किसी भी तरीके से जो पॉजिटिविटी रहती है वो आप तक पहुँचाई जाए. तो इसी मकसद के साथ आज एक और ऑडियो क्लिप मैं यहाँ पे प्ले करने जा रही हूँ, एंड दिस ऑडियो क्लिप revolves around how to retrain your mind. Yes, friends, retrain your mind. This audio clip is going to be in English. It might be quite long, maybe 10 minutes or 11 minutes, but it's worth listening. So go ahead and grab some positivity from this audio clip. I'm sure you're going to love this. So I'm going to play it right away. Happy listening. Happy listening. Stay tuned. Stay positive. Why is it so hard to do the little things that would improve my life? The way that our minds are designed is our minds are designed to stop you at all costs from doing anything that might hurt you. There are so many people in the world, and you know, you may be watching this right now, and you have these incredible ideas, and what you think is missing is motivation. And that's not true. Because the way that our minds are wired, and the fact about human beings is that we are not designed to do things that are uncomfortable or scary or difficult. Our brains are designed to protect us from those things because our brains are trying to keep us alive. And in order to change, in order to build a business, in order to be the best parent, the best spouse, to do all those things that you know you want to do with your life, with your work, with your dreams, you're going to have to do things that are difficult, uncertain, or scary, which sets up this problem for all of us. The one thing we have in this world is we can't control the events, but we can choose what to focus on, we can choose what things mean, and we can choose what to do. Those three choices, those three decisions really control our life.
you can always make a decision. That's always in your control. Staying with somebody that treats you like garbage is a decision. It is. Staying at a job that you hate is a decision. Staying in the body that you are not proud of is a decision. Is it going to be easy? No, it's not going to be easy to change. It's simple. It's your job to push yourself. It's not the smartest people who achieve success. It's the people who procrastinate less, make fewer excuses, as they take actions every day towards the goals that they want to achieve. Indecision is the thief of opportunity. Indecision means the door is still closed. Indecision means the opportunity waits. Indecision means what could be is postponed or may never be. If you want to be successful in anything in life, never leave the sight of setting a goal without doing something that commits you to fulfillment. The next morning, the alarm goes off, and I pretended NASA was there. It's the stupidest story. I literally went 5, 4, 3, 2, 1. I counted out loud, and then I stood up. And I'll never forget standing there in my bedroom. It was dark. It was cold. It was winter in Boston. And for the first time in 3 months, I had beaten my habit of hitting the snooze button. There were moments all day long, just like that 5-second moment in bed, where I knew knowledge what I should do. And if I didn't move within 5 seconds, my brain would step in and talk me out of it. Every human being has a 5-second window. It might even be shorter for you. You have about a 5-second window in which you can move from idea to action before your brain kicks into full gear and sabotages any change in behavior. Your life is what you think it should be. That's exactly what you are right now. You are what you thought you should be. And if you don't like who you are, you got to change what you think you should be. What you think is more important than what you do. And so if you want to change, you got to work on this attitude bit. Decide, commit, act, succeed, repeat. The one thing that all the greats have in common is they sweat the small stuff. They pay very, very close attention to every detail. What makes you comfortable can ruin you. And what makes you uncomfortable is the only way to grow. What you are and what you become depends on how you use your time. The billionaire and the beggar both have 24 hours every day. The old and the young, the black and the white, the Indian and the Asian are all given the same amount of time every day. You cannot stop a day. You cannot stop an hour. But you can control how it will be used. Your life comes down to your decisions, and if you change your decisions, you will change everything. When you understand the power of a 5-second decision, and you understand that you always have a choice to go from autopilot to decision maker, everything in your life will change. You will be a different negotiator, you will be different in sales, you will be unstoppable in the gym, because you will realize the amount of garbage that you put in the way of your hopes, of your dreams, of your potential, of your confidence, of your courage. Everything comes down to the decisions that you make. Take ownership. Take extreme ownership. Don't make excuses. Don't blame any other person or any other thing. Get control of your ego. Take ownership of everything in your world, the good and the bad.
Take ownership of your mistakes. Take ownership of your shortfalls. Take ownership of your problems. And then take ownership of the solutions that will get those problems solved. Take ownership of your mission. Take ownership of your job, of your team, of your future, and take ownership of your life. The first source of inspiration is deciding. Second source of inspiration is planning. And now, here's a big source of inspiration, beginning. Getting started. Actually turning thoughts and the notes on the paper, the plans, actually now committing it to action. Getting started. I'm a humongous believer that ideas are and that execution is the game. Well, I think the one thing that discipline definitely does help you with is it helps you get things done. And when you get things done, when you actually do things, you have more success. If you have more success, and sometimes a big part of success is just not being lazy and just doing it. That's like 90% of it is just showing up. Get there and start working. Like, you're not going to feel perfect every day. If I only worked out when I felt good, I'd be a fat f***. Discipline, it does start with waking up early. It really does. But that is just the beginning. And I always say that discipline is the root of all good qualities. But you have to absolutely apply it to things outside of just waking up early. It's everything. It's working out every day, making yourself stronger and faster and more flexible and healthier. Discipline is eating the right foods to fuel your system. It's about disciplining your emotions so you can make good decisions. Doing the tasks that you don't necessarily want to do, but that you know will help you. The thing about self-discipline is that it is necessary for everything you do in your life. You have to be self-disciplined. Discipline is not punishment. It's not. If you change your mindset and really focus it on what discipline really is, you start to welcome discipline. You welcome self-discipline into your life. People have to know you, not because, oh, he's a good salesman. Oh, he's a good this. Oh, he's an artist. People need to know you for one major thing first. He works. He produces. The guy's there every day. The guy's pushing and shoving. Because the truth is, no matter how good your ideas are, how good your art is, or how good your skill set is, if you're not working, man, if you're not vibrating at a frequency that people say, my God, how does that guy do all that? If you're not vibrating at that rate, if you're not working at that level, you're not going to make it. So दोस्तों, wasn't it a wow audio clip? Well, I loved it. I thoroughly enjoyed it. And I believe I am going to live every bit of this audio clip. And in case you also loved it, go ahead, grab these things in your life and make your life more effective by retraining your mind. So it's never too late to retrain your mind. So this was the audio clip for this episode. In case you do have any audio clip that gives positivity, optimism, encouragement, determination, and so on, then share with me and I will definitely make it a part of this inspirational ride. For now, I have to take a quick break, but we'll be right back with the series of segments waiting for us. Stay tuned, stay positive.
रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। मुझे इंग्लिश भी समझ में नहीं आ रही। मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपने इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। You are listening. Radio Udaan, a flight of life. www.radioudaan.com. So now we are in the segment of thoughts, quotes, words and sayings. जी हाँ, इन दिस सेगमेंट हम बात करने जा रहे हैं ख्यालों की, क्योंकि अक्सर जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं या पाते हैं वो हमारी सोच, हमारे थॉट्स पे निर्भर करती है चीज। तो क्यों ना अपने थॉट्स को और भी पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनाया जाए। तो चलिए बढ़ाते हैं कदम इन थॉट्स की तरफ। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। The first thought for this evening is, God has you in His palm. He knows every need of yours. He knows every struggle of yours. So keep moving ahead with confidence. जी हाँ दोस्तों, सच बात है कि आपके जितने भी दर्द हैं, स्ट्रगल हैं, जो भी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, वो सभी भगवान को पता है, क्योंकि आप उनके हाथ में हैं। और आपको क्या करना है? आपको बस आगे बढ़ना है, कदम बढ़ाने कॉन्फिडेंस के साथ। So God has you in His palm. He knows every need of yours. He knows every struggle of yours. So keep moving ahead with confidence. So chaliye, the second thought for this evening is, in case you want to feel happiness in your life, then appreciate the small things. जी, अगर आप कहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशी है ही नहीं, तो शायद आप गलत फहमी में जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, खुशी अगर आप जीना चाहते हैं, खुशी अगर आप महसूस करना चाहते हैं, तो आपको जो छोटी छोटी चीजें जिंदगी में, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास अच्छी फैमिली, अच्छे फ्रेंड है, या फिर आपके पास एक मोबाइल फोन है बात करने के लिए, इंटरनेट है, या फिर आपके खाने को खाना है आपके पास। तो छोटी छोटी चीजें, तो ये सभी चीजें make a great big picture impact. So in case you want to feel happiness in your life, then appreciate the small things. So chaliye dosto, the next thought for this evening is, when you take your time, जी हाँ दोस्तों, when you take your time with God and listen to Him, He renews your strength. जी हाँ, जब आप समय निकालते हैं अपने भगवान के लिए और उन्हें सुनते हैं, उनकी जो दिशा है उनकी बात सुनने की कोशिश करते हैं, तो
तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो रिन्यू हो जाती है, आप में एक नई ताकत आ जाती है। चाहे कोई भी चैलेंज हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी बैटल हो, आपका जो पैशन है वो वापिस आ जाता है। सो व्हेन यू टेक योर टाइम विद गॉड एंड लिसन टू हिम, ही रिन्यूज योर स्ट्रेंथ। तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज God has never stopped being good. जी हाँ दोस्तों, God has never stopped being good. We have just stopped being grateful. जी हाँ, भगवान ने कभी भी कमी नहीं छोड़ी हम सभी का भला करने के लिए, पर हम ही हैं जो इतनी उम्मीदें लगाते हैं, हम ही हैं जो थैंकफुल नहीं है भगवान को लेके। So God has never stopped being good. We have just stopped being grateful. तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज nobody can stop you from being kind and strong. You have to believe that's it. जी हाँ दोस्तों, सच है ये कि कोई भी आपको nobody can stop you, कोई भी आपको रोक नहीं सकता काइंड होने के लिए या फिर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। You have to believe that's it. आपको बस विश्वास रखना है बस, और किसी की जरूरत नहीं है। कोई कुछ कहता है कहने दो। You have to be more about yourself. You have to believe in your thinking, thoughts, tasks, and then your perspective. So nobody can stop you from being kind and strong. You have to believe that's it. तो चलिए, the next thought for this beautiful evening is the only way to maximize the performance is to calm at mind. जी हाँ दोस्तों, खूबसूरत थॉट है ये, सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूव हो सकता है अगर यूज करें। मैं अपने लिए भी अगर ये यूज करूं तो आई एम श्योर कि इट इज गोइंग टू हेल्प मी इन अ ग्रेट वे। सो जो थॉट था वो था द ओनली वे टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस इज टू काम एट माइंड। जी, अगर आप दिमागी तौर पे काम होंगे, शांत होंगे, तो आपका जो परफॉर्मेंस है, चाहे डांस परफॉर्मेंस हो, चाहे वो एक फाइट हो, चाहे वो एक स्विमिंग रेस हो, या फिर कोई आर्ट कंपटीशन हो, कैसा भी कोई भी फील्ड, कोई भी कंपटीशन क्यों ना हो, आपका जो पोटेंशियल है वो आपकी परफॉर्मेंस में और भी उभर के आएगी, आपकी परफॉर्मेंस और भी मैक्सिमाइज हो जाएगी। जस्ट इन केस यू काम योर माइंड। अगर आपका दिमाग शांत है तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो और भी उम्दा होगा। So the only way to maximize the performance is to calm at mind. चलिए, the next thought for this evening is find happiness and you will be untouchable. जी हाँ, एक बार आपको खुशी की डोर पता लग गई कि आपकी जिंदगी में खुशी कैसे रह सकती है, कैसे आपको खुशी मिल सकती है, तो आपको कोई भी टच नहीं कर सकता, कोई भी दुख, कोई भी दर्द आपको ज्यादा देर के लिए तंग नहीं कर सकता। सो फाइंड हैप्पीनेस एंड यू विल बी अनटचेबल। तो चलिए, द लास्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ। यू नीड नॉट टू सी द फुल स्टेयरकेस। जी हाँ दोस्तों, जो पहला कदम है अपना वो आप विश्वास में रख लीजिए, फेथ कीजिए और पहला स्टेप उठा के रख लीजिए। यू नीड नॉट टू सी द फुल स्टेयरकेस। आपको पूरा जो सीढ़ियों का वो जो सेट वो पूरा देखने की जरूरत नहीं है। जी, आपने अक्सर ये चीज देखी होगी कि जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हम पहली सीढ़ी देखते हैं बस, अब पूरी ऊपर तक तो नहीं दिखती ना, राइट फ्रेंड्स? सो द सेम थिंग इज विद अवर लाइफ। Take the first step in faith. You need not to see the entire staircase. So these were the quotes of this segment, and I hope these thoughts really proved helpful for you. Well, अगर आपको पॉजिटिविटी मिली तो जरूर अपनाइए अपनी जिंदगी में, और अगर आपके पास भी है कोई थॉट्स, do share with me. Don't hesitate, because these thoughts can change somebody's life. So share with me, and I will definitely make them a part of this inspirational ride. Happy listening, stay tuned, stay positive. I'll be right back with the remaining segments.
कैसी तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसी तेरी खुद गर्जी, किसी ठोर टिके ना पाँव, कैसी तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसी तेरी खुद गर्जी, किसी ठोर टिके ना पाँव। बन लिया अपना पैगंबर, कर लिया तू साथ समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा। कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइया। टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई, रास्ता देखे दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही, रास्ता देखे कैसी तेरी खुद गर्जी, लब नामक रमे नाम तेरी, कैसी तेरी खुद गर्जी, तुझे प्रीत पुरानी मिसरी, मस्त मौला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर, बुझ के यूं अंदर ही अंदर क्यों रहेगा। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा। कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइया। You are listening Radio Udaan, a fiber line. www.radioudaan.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the segment of tips, and in this segment, like always, we are going to walk through 5 English tips. So दोस्तों, today's tips will be revolving around how to overcome the things, the noises, the voices, the everything that affects you unnecessarily. Yeah, for example, if somebody has said you are doing this, that would be better, and blah 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 and blah, unnecessary advices, suggestions and so on, or just talks, these things can be avoided. Yes, these can be really avoided if you have these tips in your hand. Yeah, we are going to talk about 5 tips which will keep you untouched by these unnecessary talks, voices and noises. So let us move further towards these 5 tips. These tips are going to be in English. Stay tuned. The first tip for this evening is, maybe many of you might disagree, but it's a harsh reality.
if you want to overcome the unnecessary talks of people, your neighbor, your friends, your colleagues, your peers, and so on, then the main thing is to be thick-skinned. Yes, friends, by thick-skinned I mean that you should be so thick-skinned that nobody bothers you. Yes, even if somebody is yelling at you, even if somebody is saying something blah blah and blah about you, you won't get anyway affected. So, for that you have to develop a habit. It will take time, certainly it will, but once you have grabbed it, you are going to live a happy and untouched life. Yes, friends. So, go ahead and be thick-skinned. By thick-skinned I mean, for example, if somebody just apply a chundi on your arm, it will hurt you in case you are thin-skinned. But if you are thick-skinned, it might not hurt you much. So thick-skinned means if somebody is saying anything, you are not getting affected. So dosto, this was the first tip. The second tip for this evening is be passionate. Yes, friends, it's not just about your office. It's not about just 9 to 5 hours. It's about being passionate. Maybe you are just passionate about music. Maybe you are just passionate about mimicry or dancing or fitness or anything else. Be patient and passionate about it. Because passion is something that keeps you involved, engaged, growing, and you feel contented. Because many of us never feel contented with our jobs, with our office tasks, with our whatever we are doing, right? But in case we have a passion apart from our job, or maybe in case our job is our passion, our life can become really rosy, and nobody's unnecessary talks are going to affect us in any way. So try it yourself. In case you have any interest in anything apart from your work, then just go ahead and try it out with passion. So dosto, this was the second tip. The third tip is make music your best buddy. Yes, friends, when your headphones are up, let the voices fade away. Make your music your strength. Make your music your best friend. Make your music the soul of your life. Yes, friends. Music, by music I mean maybe you like rock music, maybe you like classical, ghazals, soft music, jazz, and so on. So just pick the type of genre you like and listen to it whenever you feel low or you feel that somebody's talks, unnecessary talks or comments are bothering you. Just plug in your headphones and you're on the go. So make music your best buddy. So dosto, now fourth tip for this evening is have some water. Yes, friends, it is effective. Have some water in case somebody has just passed an unnecessary, stupid, nonsense, blah 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 and blah comment. Just relax. Grab a glass of water and drink it, and you will certainly feel better. You will think that the comment which you didn't like just swallowed in and it drift off. So make it a point to have water, because water is not just good for your health, it is also good for kicking off these unnecessary comments, talks or noises. So try it yourself. In case you're feeling bothered about any talk or any comment, just grab a glass of water. And believe me, friends, it works. Try it yourself. I have tried it and I am happy with it. So dosto, the fifth tip for this evening is, why not do some stupidity? Yes, friends. Sometimes to evade unnecessary talks of people, we have to invite some stupidity in our zone. Yes, for example, you can just splash some colors on the page, make a painting, or maybe just write down a rhyme, or talk to a friend funny manner, or just listen to some stupid music, or you can make voices, or you can do anything that is funny or stupid. This way that unnecessary heavy burden of talk will get away from your mind and it won't distract you anymore. So invite fun
invite stupidity whenever you feel bothered about the talks, unnecessary talks of people. Here I am not saying that in case your parents are guiding you, it's not an unnecessary talk. I am talking about the talks which are stupid and unnecessary. For example, in case somebody has said, "Arey, come on, you cannot do it. Why are you spending your time?" So why are you hearing this? Why are you bothering yourself by hearing that? Hear that and just invite some stupidity. Do something stupid, anything funny, and that unnecessary thing will get distracted. So try it yourself. These were the 5 tips for this evening. Maybe these 5 tips sounded quite creepy or maybe quite like so common, but once you are going to apply it, once you are going to implement them, these are going to change your life absolutely for better. So these were the tips. I'll be right back after this short break. You're listening to Inspirational Wings with RJ Divya Sharma. Stay tuned. Stay positive. जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ की मिलना यही, एक जान है भले 2 बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम भी आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, तेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा।
You are listening. Radio Udaan, a flight of life. www.radioudaan.com. So dosto, now we are in the last segment of this inspirational ride, and today we talked about, like always, so many things, from an audio clip to a moral story to a couple of thoughts to 5 amazing tips and much more. So I hope you love these segments, and in case you have any queries, questions, doubts, or you want to share some stuff with me, RJ Divya Sharma, do share with me. You can contact us through our email ID, that is mail@radioudaan.com. Our Skype ID is Radio Udaan, RADIOUDAAN, and Facebook URL is www.facebook.com/radioudaan. ट्विटर पे भी आप हमें ढूंढ सकते हैं, रेडियो उड़ान है हमारा स्काइप आईडी। व्हाट्सएप पे भी हमारा रेडियो उड़ान का ग्रुप है, वहाँ पे भी आप इन टच हो सकते हैं हमारे साथ। आप हमें एक मेल करिए और हम आपको ऐड कर सकते हैं उस ग्रुप में। तो दोस्तों, मेरा पर्सनल ईमेल आईडी भी आप नोट कर सकते हैं, दैट इज divyasharma.bs@gmail.com। और साथ ही फ्रेंड्स, आपको कुछ भी शेयर करना है, बेझिझक शेयर कीजिए। आई विल डेफिनेटली मेक इट अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइड। It can be either in Hindi or English, or maybe if you have other languages you can share. I'll try to translate it into the languages most known to people like Hindi and English. तो चलिए भी दोस्तों, अभी टाइम आता है कि मैं एक पहेली पूछूं, क्योंकि अक्सर जब हम कोई रिडल या पहेली का आंसर देते हैं तब हमारी जो पॉजिटिविटी है और जो खुशी है वो और बढ़ती है। तो चलिए मैं आपको देती हूँ एक मौका, आप एक छोटी सी फनी सी और थोड़ी ट्रिकी सी रिडल का पहेली का आंसर दीजिए, एंड यू कैन ग्रैब दिस पॉजिटिव मोमेंट। तो टुडे द रिडल विल बी एंटायरली इन इंग्लिश, बिकॉज अदरवाइज द trickiness of the riddle might get kicked off, right? So chaliye, the riddle is, in case a plane crashes on the border of US and Canada, where would the survivors be buried? Let me repeat it again. In case a plane crashes on the border of US and Canada, where would the survivors be buried? So chaliye, I'll be waiting for your answer. You can answer me till our next episode. I'll be answering this riddle in the first segment of next segment. Let me quickly repeat this riddle again. In case a plane crashes on the border of US and Canada, where would the survivors be buried? तो चलिए दोस्तों, अब मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हुई इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नरंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। और आप ध्यान रखिए अपना, अपनों का, और पॉजिटिविटी को फैलाते रहिए, नेगेटिविटी को भगाते रहिए। तो आई विल बी मीटिंग यू नेक्स्ट वीक, सेम टाइम ट्यूसडे 9 to 10 PM, एंड रिपीट एवरी वेडनेसडे 4 to 5 PM, only on Radio Udaan, a flight of life. Stay tuned, stay positive, and keep inspiring. ख्वाजा जी, ख्वाजा, ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, या मोइनुद्दीन, या मोइनुद्दीन, या ख्वाजा जी, या ख्वाजा जी, या ख्वाजा जी, या ख्वाजा जी, या ख्वाजा जी। ख्वाजा मेरे
ख्वाजा दिल में समा जा शाह का शाह तू अली का दुलारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा शाह का शाह तू अली का दुलारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा बेकसूर की तकदीर तूने सवारी बेकसूर की तकदीर तूने सवारी ख्वाजा मेरे ख्वाजा तेरे दरबार में ख्वाजा नूर तो है देखा तेरे दरबार में ख्वाजा सर झुकाते हैं औलिया तू है वली ख्वाजा रुतबा है प्यारा चाहने से तुझको ख्वाजा जी मुस्तफा को पाया ख्वाजा मेरे ख्वाजा 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 दिल में समा जा ख्वाजा समा जा शाह का शाह तू अली का दुलारा मेरे पीर का सदका मेरे पीर का सदका है मेरे पीर का सदका तेरा दामन है थामा ख्वाजा जी गली हर बना हमारी छाया है खुमार तेरा जितना भी रश्क करे बेशक तो कम है मेरे ख्वाजा तेरे कदमों को मेरे रहनुमा नहीं छोड़ना गवारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा शाह का शाह तू अली का दुलारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा 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 दिल में समा जा शाह का शाह तू अली का दुलारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा ख्वाजा मेरे ख्वाजा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा बेकसूर की तकदीर तूने सवारी बेकसूर की तकदीर तूने सवारी ख्वाजा मेरे ख्वाजा 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 तेरे ख्वाजा ख्वाजा शाह का शाह ख्वाजा अली का दुलारा ख्वाजा जी ख्वाजा जी ख्वाजा जी ख्वाजा जी